with 6 reasons then. That's what I'm saying. What all have you observed? Based on that, you have to illustrate. And guys, please increase your speed. Yeah, I gave you 1.5 hours. There are 5 questions. We did only 3. So the proportion looks very odd. Like the size of the bristle part looks very big compared to the stop or the holding part. Right. And the length of the, I don't know what it is called, the space between the holding part and the bristles, that looks very tiny as well. Right. What else? देखो, illustrate and annotate these problems. Illustrate means you will have to draw. And you have to draw the problems. तो क्या होगा जब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है, ये वाला सेक्शन जो हैंडल है उसका वो ऐसा है. The handle is like this. Only the handle part is like this and the bristle part is like this. So this is like 90 degree turn कर दिया ये दोनों sections, right? So every time I brush my teeth, generally this is a single plane. No, I have to consider it like single plane. So I hold the brush like this. My fingers are towards the mirror, right? Now in this particular design, I'll have to hold it like this, or I'll have to hold it like this. The way I grip it, because these planes are at 90 degree. तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ तो जो मेरा ब्रसल है, ब्रिसल्स का जो साइड है वो 90 डिग्री एक्स्ट्रा ट्विस्टेड है. Are you getting the point? Yes, sir. Are you getting this particular point? तो क्या होगा जब when I have to hold it ना, generally I hold my brush like this. So my bristles are towards my teeth. It is 90 degree to my teeth. If this is my teeth, then the bristles are 90 to my teeth. Now in this section, because it is twisted, so मैंने इस साइड को ऐसा ट्विस्ट कर दिया और इस साइड को इतना, इस साइड ये जो ब्रिसल साइड वो ऐसा ही रहेगा. So if this remains this way, I have to hold my brush handle like this, or I have to handle like this so that it remains straight, or I have to twist the brush like this, some or the other odd function. So you have to illustrate the hand grip. This is the most critical aspect of this question. समझे प्रॉब्लम क्या होगी? Illustrate and annotate the problems in the space provided. Describe each problem in one sentence. What are the most 6 important problems? So अब ये जितना भी gripping से related problem है ना, you can mention this thing. So first thing is when you try to put toothpaste on the brush, that thing will not hold. You will either have to twist your wrist or make the brush this thing accordingly. Second thing is if I keep the brush on the floor, it will not stay without touching the ground. I mean अगर मैं ब्रश एक नॉर्मल ब्रश ऐसे रखता हूँ, ग्रिप इसकी ये वाली है और ब्रिसल साइड इसका वाला है, तो ये कुछ ऐसे दिखता है. इट लुक्स लाइक दिस, राइट? सो क्या होगा कि जब मैं टूथब्रश अगर मैं इसको ऐसे जमीन पे रखूंगा तो नॉर्मल टूथब्रश मेरा ऐसे रहता है, बट दिस विल बी लाइक ब्रिसल्स ऑन दिस साइड. So I will not be able to keep the bristles clean. The bristle will have contamination because it's touching the floor. That is the second number problem. And the third problem is, बताओ क्या प्रॉब्लम होगी? थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ये सेक्शन ट्विस्टेड है. The neck of this brush, let's call it neck. So neck is twisted. अभी नेक ट्विस्टेड होगी तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? When we use it, the brush generally flexes, but the flex part will be opposite direction. It won't be flexing opposite to our hand, but it will be 90 degree. Exactly. Because this thin side has become a thick side now. So उसका जो bending motion है ना, ये वाला जो motion है, ये चीज नहीं होगा. अब ये चीज नहीं होगा तो you will not be able to feel comfortable when you are brushing your molar teeth at the end side, the last end of the teeth. You will not find the brush actually taking the curve, or you will not able to feel the brush not treating your teeth or gums very softly. वो जो प्लास्टिक का एज है वो कहीं ना कहीं हिट करेगा आपके teeth में, तो वो भी इलस्ट्रेट करना है. You have to show a set of teeth and the gums, and you have to show that this part is actually brushing the gums. I mean, this part is hitting the gums, which is not the bristle part. This is the rubber part. So rubbers are hitting the gum.
एंड बिकॉज देर इज अ डिफिकल्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्लेन्स में 90 डिग्री का डिफरेंस आ गया, तो इसलिए यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस मोशन और दिस मोशन प्रॉपरली। या तो आप ऐसे होल्ड करोगे और ऐसे करने की कोशिश करोगे, जब आप ऐसे करोगे तो आपका जो वर्टिकल अप डाउन मोशन होता है ब्रश का, वो नहीं ढंग से हो पाएगा। ठीक है, 4 प्रॉब्लम्स हो गई, और बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Sir, this is ergonomically incorrect, so it could hurt the teeth and cause bleeding. एग्जैक्टली तो वो वाले प्रॉब्लम भी लिख सकते हो। और क्या हो सकता है? See, your grip is distorted. So every time your grip is distorted, you will have wrist pain also for long-term usage, right? And also the bristles will broke very quickly because of this wrong direction Right. of brushing. So your brushing will not be efficient, and your bristles also may get damaged very fast. Right, so these kind of multiple reasons are there. You will not be able to keep the brush flat on a surface. This is one reason. I mean, one of the problems. So let's just we have to mention 5, 6 points. So Abhi, what they are trying to do in this question, this kind of brush actually doesn't exist. It's just that they want to see what all situations you can imagine if certain things get distorted. So they are checking your observation skill, they are checking your imagination skills, they are checking your ability to visualize real world problems, real world performance of a product. So that's why it's a part B, and it's a very heavy weighted question, because they are testing multiple things, and in between they are asking you to illustrate. So asking you to illustrate means they are expecting you to show some good sketching skills also. Oh, still some people. Right? So इस तरीके से you have to think. You have to do very keen observation. You have to do very keen observation on each and every component. और उसके बाद उसको visualize करना है. That's why I have mostly tell you, like take pictures of in and products in and around you and observe them closely. तो आप जब photograph करोगे, so you will have a very keen attention to the product, very keen detail, very keen focus towards different parts of the product. तो अगर ये टूथब्रश ही अगर आप ले लोगे, तो उस टूथब्रश के कम से कम 30-40 फोटो आप ले सकते हो अलग अलग एंगल से ना. So every time you take a picture of that brush, there is a visual memory bank building in your brain. So that is where you will be able to spot such problem. Otherwise क्या होगा कि one shot में try करोगे और maximum people, like Shreyas mentioned, maximum time you will be able to spot or understand just one problem. So problem क्या थी? Problem था distortion of the brush handle. But some people felt like it's just the problem of the bristles, or many a times people will say that normally तो brush है, इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा. There is a very good reason that they have took that picture on a black background, and the brush color is white and blue, so that they want you to see this part of the brush. Are you getting my point? आपको बहुत minutely observe करना है कि कहाँ पे distortion आया है. Once you observe that there is that particular space of distortion in that particular orientation, you will be able to visualize in good 5-10 minutes, and you can easily write 5-6 points. That is the whole idea. And on the first attempt, in the first go, it may appear that the question is very difficult, but it's not difficult at all. We all are brushing our teeth almost daily, right? For last 10 years at least, or a good 20, I would say. So आप 20 साल से ब्रश कर रहे हो, तो अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया तो फिर क्या किया, right? So they will always test you on these basic stuff. They will not go anywhere
out of the day-to-day activities, or they will not ask you something which is completely out of you. हाँ, एक दो questions हो सकते हैं where things are really tricky, but still you will be able to clear this exam with just the daily activity observations. अगर आपका daily lifestyle में भी you are a very keen good observer, you will be able to crack this exam. At least you can get under 200 rank for sure. Right? अभी देखो question number 4 करते हैं. Any doubts in question number 5? Anyone wants to discuss anything? Hello. Yeah. Sir, I am not able to represent the idea. Like I have communication problem to represent what is the problem, and I mean I have sent one picture on the group where I solved the question, but I just thought it is a normal brush, and still I face this problem that I can't communicate the idea. See, the representation which you have done is good. It's just that you have to think very deeply, very into the depth of the problem. So अगर आप बहुत slowly रोज observation की practice करोगे ना, तब ये चीजें धीरे धीरे build होंगी. There is nothing wrong with your sketching skills as such. भाई आपने जितना practice किया, try to understand this thing. आपने जितना practice किया, उसके हिसाब से कोई skill develop हुई है. If you are not practicing something for 2 hours every day, you cannot expect those skills to be like extraordinary. We have a certain learning curve, right? We have a certain learning curve, and for most human beings, 99% of the time, it's a very standard slow learning curve. We cannot learn something immediately in just 24 hours, right? Even if somebody teaches us all the theory. So majority of things, and especially sketching, visualization kind of things, they are developed at a slow pace, day by day by day. So that's why when I tell you that do photography, use your phone camera every day aggressively, that is what my purpose is. So I want you to understand these things, observe these things on a day-to-day basis. So अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बॉटम कर्वेचर है ये जनरली फ्लैट रहता है. फ्लैट इन द सेंस दिस इज जस्ट वन कंटिन्यूअस कर्व. अब जो वो पिक्चर है उसमें ये वाला पोर्शन ऐसे है, like this. If you see the picture again with a zoom view, right? और ये जो कर्व है नीचे वाला, ये सब जगह कॉमन है. This is a 50 rupee brush and this is a 500 rupee brush. It's a motorized one, right? But यहाँ पे भी फंडामेंटल वही, ये जो सरफेस है बॉटम का, ये फ्लैट रहता है. It's a single smooth curve. It's not like यहाँ इस टेक्सचर में कुछ प्रॉब्लम होगी. और ये जो ब्रिसल वाला क्रॉस सेक्शन है, ये जनरली ऐसा ही रहता है. तो ये यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है ना, द क्रॉस सेक्शन. तो अब क्या किया है, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट क्लोजली, इन्होंने ये जो नेक वाला पोर्शन है उसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया. तो ये साइड का पोर्शन तो ऐसा रहा और ये वाला पोर्शन ऐसा इस साइड ट्विस्ट हो गया. तो वो जो 90 डिग्री का डिस्टॉर्शन है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी यूज करने के लिए, वो नोट डाउन करना है, वो इलस्ट्रेट करना है. सो योर इलस्ट्रेशंस overall style is decent. It's just that you need some sketching practice. You have observation sense. It's not like you don't have observation sense at all. Your observation and sketching is relatively decent. It's just that you need to practice this thing multiple times. Like daily अगर आप 1-2 घंटा sketching करोगे तो ये इससे भी much better हो जाएगा. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम बस ये कि हमने अभी तक उतना एफर्ट्स ही नहीं डाला कि हमको उतना लेवल का रिजल्ट दिखे. That's all. Right? So don't worry about that. Don't doubt your abilities. Try to put in 100-200 hours of learning. 3-4 महीने अगर आप कोई एक चीज प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद you reach a stage where you can see कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. To see a significant amount of skill development or skill growth or quality improvement, you need 3-4 months of dedicated daily practice. और हर चीज में ही है ये. So there is nothing wrong with your observation skills or expressibility or drawing skills as such.
They are all fine. It's just that you need to put more effort. उसके बाद हाँ उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा. ठीक है. Now we'll go to question number 4. Okay, देखो question number 4 क्या था? Question number 4 was regarding mixer grinder, right? Visualize a form for a mixer grinder body matching the design language of the given jar. अब जो design language है, design language क्या है? Design language means जो particular उसका form factor है. Form factor means जार का जो external shape है, जो उसका handle का design है, उस handle के design में जो curves use हुए हैं, जो इतना उसको volume और gripping size दिया गया है, that is together called form of the particular object, right? अब evaluation criteria question क्या? Use the same perspective as that of the given jar. Perspective मतलब क्या? अगर जैसे मेरा ये जार है, ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल से देख रहा हूँ तो मुझे ये सरफेस दिख रही है, ये साइड की सरफेस दिख रही है, दोनों, ठीक है. तो यहाँ पे भी आप विजुअलाइज करो, ये जो जार है उसका ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो कैविटी होता है ना, छोटा सा ओपनिंग, वहां पे मुझे हल्का सा इलिप्स दिख रहा है. इफ यू कैन सी दिस पार्ट, दिख रहा है? ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, दिस पार्ट, राइट. सो दिस सेम पार्ट आपको जब आप बॉडी डिजाइन करते हो नीचे वाला, उसमें भी वो पार्ट उसी लेवल पे दिखना चाहिए. व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जैसे सपोज दिस इज माय जार एंड दिस इज द बॉडी. तो जार और बॉडी जब ऐसे रखेंगे तो इसका प्लेन का व्यू और इसके प्लेन का व्यू सेम प्लेन में होना चाहिए. सेम प्लेन इन द सेंस उस प्लेन का जो आपस में जो उसका स्टैकेबिलिटी या जो आपस में उसका रिलेशनशिप है वो पैरेलल होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि मेरा ये प्लेन ऐसा दिखे और ये प्लेन ऐसा दिखे. अगर मैं बॉडी को ऐसे दिखा थोड़ा बना दिया, या फिर बॉडी का ये वाला सरफेस मैंने ऐसा दिखाया और ये वाला सरफेस ऐसा दिखाया, तो वो प्लेन गड़बड़ हो जाएगा. तो प्लेन हैव टू बी पैरेलल. दैट्स व्हाई दे सेइंग यूज द सेम पर्सपेक्टिव एज दैट ऑफ द गिवन जार. तो अब जब सेम पर्सपेक्टिव रखोगे तो उनका कहने का मतलब ये कि जो आपका प्लेन है वो सेम होना चाहिए, और जिस टाइप का वॉल्यूम आपने उसके जार के लिए यूज किया, उसी टाइप का वॉल्यूम, उसी टाइप का शेप की ज्योमेट्री आपको नीचे वाले के लिए भी यूज करना है. कई बार लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाला जार तो 3D में दिखेगा और बॉटम वाले जार को फ्लैट 2D में बना देंगे, या they'll just do a side profile because of slow sketching speed or whatever. So they will not be able to properly attempt that exam. तो आइडियली क्या करना है, अब जैसे ये जार है ना, सॉरी ये वाला एक मिक्सर ग्राइंडर का डिजाइन है. Are you guys able to see my video? Yes sir. Right. So अभी देखो ये जो शेप है ना, इसके कर्व की कंटिन्यूटी है. ये यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ and it went all the way to down. So they could have also done it like just making a straight line wall and make it like a box shape or a plain perfect cylinder, but they didn't do it like this. तो ये bottom में भी ऐसे grooves डाले, देखो these are grooves ना. So this is what is called doing it aesthetically with proper sense of styling and form factor. तो form कैसा है, अभी this whole thing looks like a big egg shape. Egg कह लो या फिर एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म कह लो, राइट. तो अभी अगर इस शेप को मैं इसके ऊपर लगा देता हूं, तो विच लुक्स बेटर, दैट शेप और दिस शेप? अगर मेरा मिक्सर ग्राइंडर ऐसा बॉक्स की शेप का होगा, हाँ, तो अभी देखो फर्स्ट वन क्यों अच्छा लग रहा है, बिकॉज आपको ऐसा फील आ रहा है कि हाँ ये कर्व्स कंटिन्यू हो रहे हैं, राइट. दैट कॉन्टूरिंग इज बेसिकली कंटिन्यूइंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, और वो बॉटम के इस साइड में भी वो कर्व्स की कंटिन्यूटी है, देख रहे हो आप. तो ये जो टॉप का कर्व था या ये जो बॉटम का ऐसा कर्व जा रहा है, उसी कर्व के स्टाइलिंग को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने बॉटम में भी ये कर्विंग किया हुआ है. इसका कोई बहुत क्रिटिकल नीड नहीं है. इट इज नॉट लाइक कि अगर ये नहीं बनाएंगे तो इंजीनियरिंग फेल हो जाएगा या मशीन काम नहीं करेगी. बट दैट इज वेयर डिजाइन कम्स इनटू पिक्चर. वी ट्राई टू मेक थिंग्स मोर इमोशनली एक्सेप्टेबल, मोर इमोशनली फील गुड. तो हमारा काम होता है इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोडक्ट्स को फंक्शनल और इमोशनल प्रोडक्ट्स बनाना. जैसे कोई भी मोबाइल फोन कॉलिंग और मैसेजिंग तो कर ही देता है,
But what makes iPhone so emotionally involving is it has those nice edges. It has a great display. It has all these beautiful icons and colors and everything in between, right? So apart from engineering, also there is an aesthetic factor which you can do just by doing a better form of the object. So this particular exercise is about that form identification. आपसे ये expected है कि आप उस form की beauty को समझें, उस form की beauty को कैसे इसमें incorporate किया गया उस logic को समझें. तो आप जैसे इस particular shape का इस particular jar में जो handle है, if you can see, the handle has a particular shape to it. That handle like this, it has a continuity. Instead of just doing it like an L-shaped handle, they have done it like a proper geometric arch. So वही geometric arch को can we do it at the bottom? Can we do it continuously at the bottom? So abhi if you see these options, so see one of the option is this, but another option can be something like this also. So see, Venkata's option, if you see, he has very well integrated the blue and black theme. And जो हैंडल का ये वाला शेप है वही टाइप से उसने उस बॉडी शेप में भी एक कॉन्टूरिंग किया हुआ है. सो लाइक दिस यू हैव टू थिंक अबाउट गोइंग फॉरवर्ड. लाइक मुझे उसका जार और मिक्सर का जो बॉडी है उसको देख के ऐसा लगना चाहिए कि दिस जार बिलोंग्स टू दिस बॉडी. ही हैज डन इट वेरी वेल एक्चुअली. अपार्ट फ्रॉम the line quality and a slight twist in the geometry, the bottom still looks very flat, but if you just do a slight perspective correction, this is a very good winning entry, I would say. Oh, this got twisted. This is also a good option, but see, you have to understand the overall form. तो एक तो ये स्टाइल हो गया कि आपका जार का वॉल स्ट्रेट है तो मैं बॉटम भी स्ट्रेट रखता हूँ. बट जार का वॉल स्ट्रेट इसलिए बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग रीजंस. इफ यू हैव a spherical kind of a jar, then you will not have the best mechanics of things rotating around the stuff. So उसका internal mechanics को consider करते हुए you cannot create any random shape of the jar. But with the body design, you can play around a lot more creatively. तो आप ये स्ट्रेट एज के बजाय कुछ और भी ट्राई कर सकते हो. दूसरी चीज ये है कि जो स्ट्रेट एज है ना, दैट इज अ वेरी सिंपल डिजाइन. सो व्हेनेवर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस अपीयर, दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू गो बियॉन्ड द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑप्शन. सो दिस इज ऑल्सो, दो फंक्शनली इट्स अ गुड डिजाइन डन बाय धीरज, बट आई वुड से ट्राई टू गो अ स्टेप बियॉन्ड दिस पॉइंट. लाइक ये स्ट्रेट बॉडी के बजाय कुछ और टाइप का डिजाइन हो सकता है क्या? तो अगर कुछ और टाइप का डिजाइन हो सकता है तो इट विल बी ऑल द मोर बेटर, ऑल द मोर इंटरेस्टिंग. अभी जैसे ये निपुण वाला डिजाइन है, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड टिपिकल डिजाइन इन अ मिक्सर जार, मिक्सर ग्राइंडर, राइट? बट डूइंग दिस काइंड ऑफ डिजाइन विल नॉट गेट यू गुड स्कोर्स बिकॉज दिस इज एवरीथिंग वेरी स्टैंडर्ड अबाउट. दिस इज वेरी रेगुलर डे टू डे काइंड ऑफ डिजाइन. आप जनरली किसी जूस शॉप में जाते हो तो आपको इस टाइप के ही डिजाइन्स दिखते हैं. और द चीपेस्ट क्वालिटी ऑफ जूसर मिक्सर ग्राइंडर सेटअप विल हैव दिस काइंड ऑफ डिजाइन बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग ईज. पीपल कैन create boxy designs much easily. The manufacturing cost of a boxy design is much much less compared to a nice curve. But from an aesthetic point of view, this design won't look like a great wow design factor, right? It doesn't hold that wowness in terms of design. There's hardly anything new about this design philosophy when it comes to the bottom part. And second thing is the bottom, though it itself is good in its own way, it doesn't match the handle ka curve, the contouring, right? So all these factors comes into picture when they ask for the best design. I mean, when they try to judge your answers, these are the criteria. ठीक है, और देखते हैं. See another option done by Ishita. So this is also a standard design. अब sketching quality अच्छी है, but when it comes to the body design, this is a very standard, simple design, and there's no issue as such. But
when it comes to the boundary of the question, when it comes to what the question expects you to observe and study the top part and match it with the bottom part. ये वाला the challenge of this question is कि ये जो मेरा टॉप का जार है उसका एस्थेटिक्स, उसका बॉडी कॉन्टूरिंग, उसका फॉर्म फैक्टर बॉटम से मैच करे. तो जस्ट लाइक आई शोड यू इन दिस एग्जांपल, you have to follow the same ideology and philosophy, you have to follow the same process, same thinking style, and then redesign this whole. Sir, for that, what problem I faced was that I focused more on the lid part, which seemed like a classic design, because the newer lids we get are more rounded, a little thicker. So that is where it was misleading. So I got a little distracted by the top. Yeah, no problem. See, that's why we are doing all these feedback sessions now. So it's completely fine. We all do mistakes, or we all try 20 different types of options. So there's nothing of a right or wrong thing here. I'm just saying what will give you more marks and what will not give you more marks. So comparatively, we are doing the study. So that is where I'm kind of taking each and every example, because all the other 10,000 applicants will also do similar kind of attempts, similar kind of mistakes, and similar kind of design. So this is a good way to evaluate, like, where are we doing wrong things and how to improve it, right? So that's why I am kind of doing a comparative metric. Now compared to that design, see this design. So Arco has incorporated curves from that handle at the bottom, okay? And then he has kind of went into the more aesthetic, more functional aspect of it, and how the mechanism will go push to start and all that thing, which is a good thing. But again, how that handle incorporates this whole design into the body, that is one of the most important criteria. Why is that? Because अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया गया, दैट इज वेरी क्रिटिकल. क्वेश्चन में क्या चीज है? क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन अ कलर्ड इमेज, और फिर ध्यान से आप नोट करो कि हैंडल में ही कलर है, बाकी किसी ऑब्जेक्ट में कुछ कलर नहीं है. मतलब उसका जो कैप पार्ट है वो भी ट्रांसपेरेंट, जनरली ट्रांसपेरेंट ही होता है, या फिर किसी एक हल्के से कलर का टिंच होता है उसमें. एंड देन दैट हैंडल, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट some other color or just keeping it black, they have done a blue and black dual tone. So that blue and black, if you can match with the body, that would be like really scoring you very good marks. Like that would be the best thing which they would expect, and you kind of delivered the same as they expected. So whenever there are colors in a question, the question के part में अगर कहीं color का कुछ भी component है, so you should definitely give more importance to that color aspect, because they are kind of doing it deliberately, in the sense that they could have just shown you a simple mixer grinder with a line diagram. Not necessary, मतलब इतना जरूरत ही नहीं था कि पूरा फोटोग्राफ प्रिंट करने का, but they did it and specifically colored that handle part because they expect you to play around with some color in this particular question, right? So अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है, अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन में हिंट मिल रहा है कि कहीं कलर का यूज हुआ है, तो यू शुड डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट कलर. एंड जस्ट लाइक दिस लास्ट अटेम्प्ट, राइट? वेयर इज दैट पार्ट? हाँ, this one, just like Venkat did. No, so this blue and black combination you should continue, or whichever color combination, you should continue with that part. So now if you notice then that there are other details of the jar which are missing, but he has kind of highlighted the most critical aspect of that exercise, which is playing around with colors and form. Color and form मतलब color तो we all know it's obvious. Form means जो उसकी contouring है, जो shapes हैं, जो arches हैं, जो external बाउंड्रीज हैं उस शेप का, वो आप कंटिन्यू कर लो. तो जो हैंडल का एक ऐसा कर्व आ रहा था, वही हैंडल का कर्व उसकी बॉडी में ऐसे वी शेप में इनकॉर्पोरेट कर लिया. सो दैट्स हाउ यू अटेम्प्ट पार्ट बी क्वेश्चंस. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट दैट बी मोर अटेंटिव, बी मोर कीन ऑब्जर्वेंट, एंड बी मोर ओपन माइंडेड इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. you don't have to always follow a certain logic. आप बस ऑब्जर्वेंट रहिए और चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी. And play it with a very
relaxed mind. I mean, when you try to attempt part B questions, try to be very stress free about it. Don't feel like ये possible है, ये possible नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. If you only think with constraints, you will have very limited ideas. But if you think very boundary free, constraint free, and think in a very novelty way in the sense, think about what has not been done yet, or think about something which takes you towards a new kind of idea. That would definitely score higher than the regular ones. Like कोई नया shape, slightly more different than the standard, slightly more experimental, or slightly more unconventional. That is the kind of ideas which score better. Obviously उसके पीछे logic भी होना चाहिए, but more than logic here, they give weightage to your freshness of ideas. So अगर आपने कोई regular mixer grinder देखा है तो as it is उसको draw करने के बजाय try to come up with a new style of mixer and grinder. That way it would score definitely more. Because क्या है ना, 10,000, let's say 10,000 students are applying, and 5,000 of them are pretty decently good with sketching and all these skills. So out of those 5,000, if they have to select 200 or 100, they will definitely select the ones which shows more creativity with the similar amount of skills. So that is where the differentiation comes into picture. Okay, and my feedback is just for your improvement. So don't feel bad about, like I didn't appreciate it or anything like that. You will definitely improve much more beyond this point, and definitely it will be worth an appreciation from everyone. So think it in those terms. Sir, Yeah. I have a request. Like, for example, I can, like the continuation of style, I can do it like for a 2D image or something, like for an icon or a poster or something. But in the case of products, I have not been able to, like recognize that continuity. So could you maybe send examples or videos where they talk about the style used in products, or like what would be Sure. useful in this kind of question? Sure, definitely. See, this is one of the examples that I could quickly found at my place, and I kind of showed you because I thought like this is the best example you can quickly relate to. So just imagine if this jar is fixed on a very rectangular box. अगर ये bottom part ऐसा डिजाइन होता तो कैसा लगता relatively? उससे उसके functional aspect में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. But just these edges doesn't go well with these roundings or these curvatures, right? Yes. यहाँ पे surface curve हो रही है और यहाँ पे ये बहुत sharp edges है relatively. So इसलिए उस कर्व की कंटिन्यूटी से मुझे विजुअली एक कंफर्ट की फील आती है, मुझे एक विजुअल कनेक्टिविटी फील होती है. मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, थिंग्स आर वेरी वेल डिजाइंड और थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, इट्स इंटीग्रेटेड. ऐसा नहीं लगता कि कुछ जुगाड़ किया है. So the reason between a well designed product versus jugaad is that only, right? Both are functioning, but the jugaad looks like different components are integrated at the last moment. They are not part of one system, well thought through product. So that is the simplest criteria that you can consider. So whenever you are doing a 3D object, try to see that are the lines continuing, are the form factor pleasant enough, are the components fitting well together and looks aesthetically pleasing. अगर वो aesthetically pleasing नहीं लग रहे तो फिर प्रॉब्लम है. जैसे for example, what should I say? हाँ, see this is just like the pot. If you remove the pot, the mixer should give a direction that it belongs to that pot. They both relate to each other if we keep them Yes. 2 pieces away. Exactly. That is also one of the criteria. जैसे वो प्रोडक्ट आप उसको टुगेदरनेस में देखोगे ना तो वो एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट लगेगा, और जब आप उसको सेपरेट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें ये पार्ट कहीं कुछ मिसिंग है, इसमें ये फिट होना चाहिए. So when two parts are actually designed for each other, they look good when they are put together. जैसे ये मेरा एक सैमसंग का वॉच है और ये इसका चार्जर है, राइट? अब मैं इसको जब इसके ऊपर रखता हूँ, so it looks decent when they are put together. Now the watch is at charging station. So ऐसा नहीं लगता कि ये वॉच का चार्जर मैंने कहीं और से लाया है. This charger actually looks like it belongs to this watch, ना?
You getting my point? Yes, sir. They kind of looks as a part of one family. That's what form factor design is all about. Like that's what the true product design is about. जैसे ये वॉच का जितना मेरा हाइट है और ये जो चार्जर का हाइट है, ये वाला हाइट, ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। देखो दिख रहा है ना? ऐसा नहीं लगता कि वो ये जो वॉल हाइट है ये बहुत ज्यादा है या बहुत कम। और अच्छा अगर प्रोडक्ट डिजाइन होगा तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन मैंने अपना वॉच इस साइड में रख दिया ऐसा करके, ऐसा नहीं करूंगा। See, this particular flat part clearly looks like this is the bottom. This is supposed to be standing somewhere. So that's what the form factor is about. Like you have to communicate with a visual language or with a form itself that how product is supposed to be used. उसका कम्युनिकेशन आपको बहुत सटल तरीके से फील हो जाना चाहिए और उसका आपस में जो इंटीग्रेटेड कंप्लीट फॉर्म फैक्टर है वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ दे आर लाइक डिजाइन्ड फॉर ईच अदर, लाइक डिजाइंड एज अ सिस्टम. That's what it is. I'll share multiple examples, but as of now I can discuss these two things, right? Sir, What else? sir, I sent one photo. So can you Sure. see that whether that would work? That lower, yeah, that This one? Yeah. So this base one, if this would work, as you were telling with Like a pot. because sir, the handle is coming like a art. So if we like if you see the this also can work. Yeah, this also can work. So see, I mean, I can show you multiple options. One second. Let me connect my webcam. So देखो क्या हो सकता है. So see क्या हो सकता है. We can actually do how to use that arch. I would like to give you a demo. हम क्या कर सकते हैं. तो अगर ये आपका ऐसा टाइप का आर्च है तो आप जब बॉटम बनाओगे ना, तो आप बॉटम बनाते वक्त क्या कर सकते हो कि आप ये डिजाइन ऐसा भी कर सकते हो. And here is your final control knob. This is your this part. And I'm just drawing a very rough one, but all I'm saying is that you can actually use this kind of curve in any which way. So one option is like ये आपका जार है, ये आपका इसका वाला हैंडल, ये हैंडल को आपने इस टेक्सचर के साथ कहीं एम्बेड कर दिया. मैंने इस टाइप का एक कर्व बनाया, राइट. तो एक मेरा कर्व ऐसा हो गया और एक मेरा कर्व इस टाइप का हो गया. इस टाइप की भी एक ज्योमेट्री में बना सकता हूँ. ये एक टाइप का फॉर्म फैक्टर हो जाएगा, या फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, इस टाइप का भी एक फॉर्म फैक्टर हो सकता है. यहाँ पे ऐसे Sir, हाँ. Sir, you said that we can make something innovative, means unconventional. But if that design, our design, which is a bit unconventional, has some flaws, like it can be manufactured or it has some storage issues. So should we make it or should we not? Yeah, definitely. See, it should be a nice balance, but at the same time, आपको इस बात के लिए जज नहीं किया जाएगा कि it's not functional. See, you are just entering a design college. You are yet to study a lot of subjects and books and real world conditions. So they will definitely not judge you based on whether it's practical or not. And who knows that by the time you graduate, there will be some new technology
using which it becomes a reality. So it's not like you will be given less marks if it's not a functional design. Whatever it is, see, if it's a futuristic idea, the point is you should represent it well. Your illustration or your presentation of that idea should be well presented. That's all. It doesn't matter whether it is functional or not, because as a designer, your first job is to create innovative stuff. Your first job is to come up with new creative ideas. Your job is not to think about the functional aspect primarily. भाई functional aspects के लिए तो engineers बैठे हैं ना, and you are not an engineer, you are a designer, so your primary role will always be to kind of push the engineering boundaries. After that, it's not loading here. Where is the new design? So after that, अगर वो नहीं बन पाता है, send my design. One second, I'm just replying. Please. तो मेरा कहने का मतलब था अनकन्वेंशनल से मतलब ये कि जो वो बॉक्स शेप का डिजाइन होता है ना, which is like 90% of the time visible everywhere, don't do that design. उसके अलावा कुछ सोचो, बिकॉज 80% टाइम लोग क्या करेंगे कि 80% टाइम लोग इस टाइप का एक बॉक्स वाला डिजाइन बना के सोचेंगे चलो हमने तो अटेम्प्ट कर दिया, राइट? ये डिजाइन तो हर जगह दिखता ही है, सो इसके अलावा क्या हो सकता है? दैट इज वेयर यू हैव टू थिंक कि कुछ नया बना सकते हैं क्या. सो ऑल दिस वन डिजाइन एंड दिस सेकंड डिजाइन इज डेफिनेटली मोर यूनिक देन दिस वन डिजाइन, राइट? That's all I'm talking about when I talk about novelty. Got it? Clear है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब इसमें भी देखो वैल्यूएशन क्राइटेरिया, ओरिजिनलिटी ऑफ फॉर्म एंड बॉडी जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, कंसिस्टेंसी विद द फॉर्म ऑफ द जार, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया. जो वेंकट वाला डिजाइन था कि वो जो कंसिस्टेंसी ऑफ द कर्व्स है जो मैंने अभी स्केच करके दिखाया, वो टाइप की चीज. फिर डिटेल्स ऑफ द बटन्स एंड नॉब्स एंड इंडिकेटर्स व्हिच ऑर्को हैज डन प्रीटी वेल, so you can check in the group. Then surface shading and then the quality of lines and strokes, which we always talk about line quality and strokes and surface shading, right? So surface shading सबसे लास्ट चीज होगी. surface shading आप बिना surface shading के भी दिखा सकते हो, in the sense you just do a little bit of hatching like this I did. मतलब इससे तो डेफिनेटली बेटर, बट जब आप सरफेस कोई भी सरफेस बना रहे हो तो आप इस टाइप की हैचिंग कर सकते हो. लाइक इफ यू ऑब्जर्व ऑर्को स्केचेस, ही डज इट प्रीटी वेल. इस टाइप की स्केचिंग, एंड दिस इज इनफ. आपको बहुत ही ऐसे ग्लॉसी सरफेस फिनिश वगैरह करने की जरूरत नहीं, राइट? नाउ गोइंग बैक, लेट्स टेक अप अनदर set of question paper and solve it. What say? आज पार्ट बी पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन पेपर कौन सा वाला लेंगे आज? 2017 ले लो, और 2017 के पार्ट भी सारे कंप्लीट कर लो, एंड देन वी कैन मीट अगेन एट 4:30. ठीक है? ओके सर. ठीक है, 1 घंटे में सारे. अभी इस दिस टाइम यू हैव टू बी रियली फास्ट. ठीक है, वी विल मीट एट 4:30. ओके सर. विद पार्ट बी क्वेश्चंस 2017 सीड पेपर.